Well, firstly, it's always very exciting when we get to go to an outdoor location to do a shoot because the experience becomes even more personal. And I think the cherry on the cake was that we were in Britain because what can I say about Britain? I love every time I go to the UK. I think I feel like I'm going back home. I think it has something to do with my mother's connection and my grandmother's connection with the UK itself. But we shot in Leeds primarily, and literally that was like our second home for 2 months. And not once did we feel like leaving because I remember towards the end of the schedule we were like, oh God, we have to leave Leeds now. We don't want to go home. And I think what's really important is that most people don't really explore the countryside of Britain when you are traveling to the UK or you're traveling to any other destination. You always choose maybe the main hubs in the main cities. But what we got to discover just being in the outskirts of Yorkshire was so interesting and so beautiful. And as you see, Shandar's theme is a fairy tale movie. It's a fairy tale castle, and I think everything about Leeds and everything about Yorkshire that time was giving us a very fairy tale kind of energy. Thank you so much. Shahid, what was your experience like? First of all, hello, yeah. First of all, good noon, ladies and gentlemen. And the thing that I like the most about going to Britain is that it's a direct flight. I love the fact that you get on a plane and you land where you want to be. So it's extremely convenient. I really like that. I actually discovered how beautiful the countryside was pretty much in and around as we shot for this film Shandaar. We pretty much shot all of the film in Britain, and like Alia said, we shot in Leeds, but we used to travel a lot here and there. As you can see, there's a lot of beautiful castles. It's supposed to be one castle, but it's actually a few because our director Vikas Behl wasn't satisfied with just one. So he helped us discover a few castles in and around the countryside in Britain. It's extremely beautiful. The weather was absolutely fantastic when we shot. It did get cold towards the second half, but in the months of August and September, it's amazing weather. And it's extremely green, extremely lush. The roads are fantastic, so driving around is really convenient. You have trains as well, so you can actually get anywhere you want very easily. It's not a problem. It's not a hassle at all. And when films are made, there's a lot of stuff that needs to go from point A to point B with very little time to spare. So it was extremely convenient. Very beautiful. I don't think Shandaar would have been the fairy tale romance like Alia said that it needs to be without the wonderful, beautiful countryside that Britain has. So we've really been privileged to have shot there, and we're very happy to be here and to be talking about it because we truly had an amazing time shooting the film, and it's truly been memorable, and it's really something that I will cherish for a long time because this is probably one of the most beautiful looking films that I've done, and I think the countryside of Britain did complete justice to that. I'd like to add something to that. Also, speaking about how beautiful it is, yes. But one thing that me and Shahid, I think, can vouch for and say that was really beautiful was the amount of shopping we got to do over there. And the facilities of the theaters. The theaters were so cool. We were like, okay, let's just watch a film because the theater is so amazing. We would like chill and you would have like a hot chocolate and I would have something else. Obviously, this was on our cheat days. We're not doing it every day. But yeah, that's something, and both of us, I remember very clearly every off day we used to look forward to walking around, picking up a cup of coffee, and then going shopping. And we could do it, and I came back with a lot of shopping, yes. What did you shop for most? Sorry. What did you shop for most? Alia shopped. Clothes? I watched. What, Ravish? You also shopped. You shopped and bought me presents. You've forgotten about that. Oh yeah, I did. I'm very good with that. I'm good with gifts. So, I would now like to throw the floor open to all of you for questions. This is the launch of Visit Britain's Bollywood Britain Shandaar campaign. So I'm going to request our very dear friends from the media to please make sure that the questions are kept within that context. Yes. Shahid, I'm the industry from What's up? You fell in love with Britain. Is it your first time? आप दोनों का या पहले से आपको? सर एक्चुअली लंदन जाना बना रहता है, बट जिस कंट्री साइड में हम लोगों ने शूट किया मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था.
तो ब्रिटेन के कंट्री साइड को हम लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया थ्रू शानदार। और क्योंकि जैसे हमने कहा फिल्म के ऑलमोस्ट 35-40 दिन हम लोगों ने, विच इज ऑलमोस्ट द होल फिल्म, कुछ दिन हिंदुस्तान में किए, उसके अलावा जितनी भी शूटिंग हुई सब वहीं पे हुई थी। तो उस सिलसिले में काफ़ी घूमने का मौका मिला, नई नई जगहें देखने का मौका मिला, और समझ में आया कि देयर इज सो मच टू ब्रिटेन। यू नो, वन यूजुअली रिमेंबर्स लंदन, बट देयर इज सो मच मोर टू ब्रिटेन। और इस फिल्म के थ्रू हमें वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। हाल ही में आपकी हैदर फिल्म सेकंड टाइम देखी, मानी फिल्म कश्मीर में, जबरदस्त काम किया आपने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या आप कश्मीर से उतना लव करते हैं या जितना ब्रिटेन से? दोनों में कुछ फर्क पता? सर एक्चुअली कश्मीर हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, और मेरे लिए कश्मीर बहुत ही मेमोरेबल रहेगा। और ये अच्छा सवाल पूछा आपने। जस्ट एज हाउ द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड ऑफ ब्रिटेन इज सो अमेजिंग, सो इज कश्मीर। आई मीन इट्स अ ग्रेट पैरेलल टू ड्रॉ, बिकॉज कश्मीर में भी शूटिंग करना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है, चाहे आप डल लेक का व्यू देखें या आप यू नो पहलगाम और गुलमर्ग की तरफ जाएं। तो जो आपको ट्रैवल करते हुए देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि यार बड़े शहर में रहते हैं तो वी रियली मिस आउट ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ places like this. So definitely both the places are extremely beautiful. So Shahid and Alia, India is one of the most diversified and beautiful country in the world. Could you raise your hand, please? Hi, hi, thanks. So India is considered as one of the most diversified and most beautiful country in the world. You know, travelers, visitors from all over the world come to India to just explore it. So what about Britain for you people, for you guys? What's the special thing? What's the most adventurous thing in Britain you guys find in comparison to India? Sorry, you're saying that in terms of adventure sports or in terms of look and feel and culture? Look and feel and whatever you guys, I mean, so you can just talk on any aspect. देखिए, लुक और फील और कल्चर आई थिंक एकदम अलग होगा। उनका वेदर बहुत अलग है, हमारा वेदर बहुत अलग है। बट आई थिंक वन थिंग दैट यू रियली टेक अवे फ्रॉम देयर इज, जैसे कि हमारे अगर यहाँ पे आते हैं हम सब बहुत वार्म है। हमारा जैसे मतलब यू फील लाइक यू किसी को मेहमान भगवान समान होता है, यू आर वेरी वार्म टू देम। आई वुड से द सेम थिंग अबाउट द पीपल एंड द कल्चर ऑफ ब्रिटेन। दे आर वेरी वेरी वार्म, वेरी वेरी फ्रेंडली। वहाँ का तो खाना बहुत मज़ेदार है ही, दैट्स समथिंग दैट वी कांट डिनाई। मैं तो फूडी हूँ, वहाँ पे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बट इट्स something that you have to draw a I think connection with the place when you're going there. आप हॉलिडे पे जा रहे हो, आप लोकेशन देखने जा रहे हो। सेटल होना आई थिंक अलग बात होता है, बट यू हैव टू go for yourself and experience the things that you really really like, and these are the few things that I really really connect with. Shahid, what do you think? सर मैंने लाइफ में कभी हॉर्स राइडिंग नहीं सीखी थी, मुझे वहाँ पे हॉर्स राइडिंग सीखने का मौका मिला। वो अलग बात है कि हमारे डायरेक्टर ने ज़्यादा वाटरफॉल में जंप करने का वो नहीं, वो मत करना। नवंबर के महीने में वाटरफॉल में जंप मत मारना, -5 डिग्री। But there were people who were जो उसकी अरे उनकी हालत टाइट हो गई थी। पहले जंप मारो, जून जुलाई अगस्त में पानी में जंप करो, उसके बाद पानी को देखो, ऐसे हाथ वाथ डालो अंदर और ग्रीनरी को एंजॉय करो, बिकॉज सितंबर अक्टूबर में ग्रीनरी बड़ी अच्छी होती है। और खाने का जैसे इन्होंने कहा, वहाँ हिंदुस्तानी खाना बड़ी आसानी से मिल जाता है यार, सो आई एब्सोल्युटली लव दैट। और वहाँ पे कई एशियंस मिल जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यू ऑलमोस्ट फील लाइक यू आर एट होम, बिकॉज इतने सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी भाषा बोलते हैं या जो आपको जानते हैं या जो आपको अच्छा हिंदुस्तानी खाना खिला सकते हैं। मैं एक्चुअली काफ़ी कन्वेंशनल टाइप का लड़का हूँ, मुझे हफ्ते में 2-3 बार हिंदुस्तानी खाना चाहिए होता है, तो वहाँ मुझे मिल जाता है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। एक्चुअली बड़ी आसानी से मिल जाता है। आई एम वेजिटेरियन ऑल्सो, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ देयर आर मेनी प्लेसेस इन यूरोप वेयर यू माइट नॉट गेट एनी वेजिटेरियन फूड एट ऑल। ब्रिटेन इज नॉट वन ऑफ दोज प्लेसेस। इट्स वेरी कन्वीनियंट टू फाइंड वेजिटेरियन फूड इन ब्रिटेन। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, एंड दे रियली रिस्पेक्ट इट। बीइंग वीगन और बीइंग वेजिटेरियन इज समथिंग पीपल आर अवेयर ऑफ एंड दे रिस्पेक्ट इट। कई और जगहों में आप यूरोप में जाओ तो वो आपको ऐसे देखते हैं। आई रिमेंबर मैं एक जगह पे गया था मेरी पूरी फैमिली के साथ, और हमने उनसे कहा था यू नो वी नीड समथिंग टू ईट, तो दे वर सेइंग हाँ व्हाट दिस इज नॉट, दिस इज समवेयर, आई थिंक इट वाज इन इटली और समथिंग और सम अदर प्लेस। तो वी सेड दैट यू नो वी डोंट ईट एग, वी डोंट ईट मीट एंड वी डोंट हैव अल्कोहल। सो उसने 2 मिनट आपको देखा पर बोला व्हाई डू यू लिव। तो मतलब कई जगहों में ऐसा मुश्किल होता है लोगों के लिए, बट ब्रिटेन में इट्स वेरी कन्वीनियंट, सो आई रियली लाइक दैट।